Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, let's today talk about different approaches on teaching as a profession. टीचिंग जो है वो प्रोफेशन है या वो एक नॉर्मल जस्ट जॉब है, ऑक्यूपेशन है, एक ट्रेड है, एक बिजनेस है या एक वोकेशन है या क्या है? Let's talk about different approaches on that. Let's begin with teaching as a profession. आप क्या समझते हैं टीचिंग प्रोफेशन नहीं एंड मियर एक जॉब है राइट टू अर्न ब्रेड एंड बटर व्हाट इज इट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट अप्रोच like teaching as a profession. My lovely educators, you also would agree like teaching, it is not merely talking in the class ki jaake bas bol diya, regurgitate what you have learned, right? Like parrots. No, it's not teaching. Teaching is the noblest profession, and it is considered like teachers, they have got high quality basic knowledge related to the subject, whatever they are teaching, related to the environment, the surroundings, the sustainability, real life integration, general knowledge. I mean, they are considered the embodiment of knowledge, right? So, my lovely educators, through informed practices, right, while being committed to the society, we are involved in this teaching profession. We have got certain responsibilities and duties towards the children that we are following, right? We are trying to accomplish our roles and responsibilities, and we are associated with the various organizations that are considered as the embodies of knowledge, right? We are associated with those bodies. We continuously, constantly update ourselves. We keep ourselves up to date. And teaching methods that we use in our classes to teach our students, they are experimentally derived through research, right, throughout the world. You see, we constantly keep on changing. अलग अलग तरीकों से हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, नए नए मेथोडोलॉजी से पढ़ाते हैं. We keep on changing, like we are the risk takers. एक बार पढ़ाते हैं, उसके बाद में we adopt the new methodology. ठीक है, we are ready to take challenges also, right? So my dear educators, so this is considered as a profession, because before entering into this profession we undergo a formal period of preparations. We call it pre-service teachers training. जो भी जिस एज ग्रुप के बच्चों को हमें पढ़ाना है, अकॉर्डिंगली वो गो अहेड विद द ट्रेनिंग, एनटीटी, पीटीटी, डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, राइट, एंड मे बी फिजिकल एजुकेशन में बैचलर्स एंड मास्टर्स, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट डिप्लोमास एंड कोर्सेज हम करते हैं टू टीच अ पर्टिकुलर एज लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड अकॉर्डिंगली इवन इफ वी आर टेकिंग अप अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट रिलेटेड जो है उसमें भी हम स्पेशलाइजेशन करते हैं. वी गो अहेड विद द शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड कीप आवरसेल्व्स अप टू डेट, राइट? एंड इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये नहीं कि एक बार डिग्री ले लिया और खत्म. थ्रू आउट द लाइफ we keep ourselves updated. Continuous professional development, lifelong learning, in service teacher training, various orientations, workshops, programs are being conducted for us. So teaching is a profession. We follow a code of professional conduct. For that, I have already shared a video with all of you. Go through that, right? That is also very important questions that will be asked in the M.Ed and B.Ed programs too, right? The code of professional ethics. हमारी कुछ obligations हैं towards the students, towards the profession, and towards the management, stakeholders, towards the parents. वो कौन सी obligations है? For that you may watch that video. I'll be sharing the link in the description box below. And autonomy and empowerment. We are autonomous. We are being empowered. We can take decisions. एक curriculum हमें define करके दिया जाता है, हमें classroom में वो पढ़ाते हैं बच्चों को proper के syllabus के accordingly. But उसमें we have got freedom to. We can use different kinds of strategies. We can use creative methodologies. और उसमें हम assessment बच्चों की ले रहे हैं, like formative assessment. उसके लिए अपने accordingly हम different types के जो है formative assessment वो design कर सकते हैं. Accordingly we will be able to facilitate the teaching learning process. हमें बच्चों की learning needs के accordingly different तरीकों से पढ़ाते हैं. Sometimes we go ahead with one strategy. Sometimes we change the strategy as per the needs of the learners, right? Sometimes we go ahead with the multilingualism. उनकी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, उसको भी हम सीखते हैं और आगे आते हैं कि ठीक है बच्चे को इस तरीके से समझ आता तो ऐसे समझा सकें, राइट? लर्निंग बाय डूइंग, experimentation. You see, number of strategies are there through which we will be able to make our teaching, learning very interesting, engaging, and exciting.
And as ABJ Abdul Kalam ji has said, teaching is a noble profession which shapes the character, ability, and future of an individual. You can write this quote also. So ये तो हमारी होगी एक approach कि teaching is considered as a profession. इसके अलावा और क्या thoughts हैं, right? So different theories that have been given. Some people, educationists, they think teaching is not a profession. It is a vocation. More than that. I mean, vocation kya hai? It has been derived from the Latin word vocare, right? Latin word vocare, it means to call. Strong feeling for a particular career or an occupation. जब हमारे अंदर एक strong feeling होती है कि I want to go ahead with teaching. Okay, I am a born teacher. Teaching जो है, it is not by chance, it is by choice. I want to be a teacher. I have got that quality that I will be able to facilitate teaching learning process in an innovative way, and I have to work for the society. When we have got responsibilities towards someone, duties towards someone, we feel that, we realize that, it means that is a vocation, right? And we are dedicated not only towards the work, we are dedicated towards people, towards children. We are dedicated to serve people, right? And we strive for excellence. अब excellence किस में? सिर्फ इसमें excellence नहीं कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं. Excellence in teaching, not only excellence in teaching, but we want to achieve the learning outcomes also. We want to see our children excelling in different fields, right? So as per their interest. And also, we are dedicated to the public interest, commitment to the moral and ethical values, and an innate desire to share the love of learning for a subject. And teaching, it requires enthusiasm. We are enthusiastic to learn more, to share, to teach in an enthusiastic way. And it requires a lot of potential too. And apart from it, we require a lot of patience dealing with 40 students, maybe more than that, in a classroom, coming from different backgrounds, different cultures, different learning needs, different interests, different background knowledge. So it requires a lot of patience, right? And it is a mission. जब हम इसको एक तरीके से mission के तरीके से लेते हैं कि yes, this is a mission and I have to accomplish it, right? We even help our children to achieve their mission, achieve their vision. Accordingly, we design, we lay out a roadmap together. देखिए, हम ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ जहां पर हम काम करते हैं और हमारा एक टीचिंग का जो एक विजन है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने पर्सनल विजन को मोल्ड करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज वैसे सेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम बच्चों को पढ़ाते हैं एंड वी इम्पैक्ट लाइव्स. इसलिए ये कंसिडर किया जाता है कि टीचिंग इज अ वोकेशन, राइट? तो इससे रिलेटेड और कुछ बातें जरा कर लेते हैं. अ टीचर टेक्स अ हैंड, opens a mind and touches the heart. क्या मतलब है इसका? It is a vocation. It's called from within, innate desire, right? And the quote by Pope Francis: the mission of schools and teachers is to develop an understanding of all that is true, good, and beautiful, right? ये सब बातें हो रही हैं vocation की. And teaching is more than a noble profession. It is a vocation, a calling. A teacher is the most important person in any civilization, as on him depends the molding of the nations. Nation को mold कर सकते हैं. Teachers, they are the architect of the nations. They are the torch bearers, right? They are the drivers of the change. They are the pathfinders. I mean, कितने कितने नामों से बुलाया जाता है टीचर्स को, right? This quote I've already discussed, like teaching is a very noble profession, right? That shapes the character, caliber, and the future of an individual. And APJ Abdul Kalam ji has said, if the people remember me as the good teacher, that will be the biggest honor for me. हम इनके नाम पर स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, right? And there are very few teachers, there are very few real teachers. Teaching is not a job. जॉब नहीं है कि ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए सिर्फ करते हैं. पैशन है. इट इज अ वोकेशन एंड टू बी अ ग्रेट वन मेनी क्वालिटीज मस्ट बी कंबाइंड. एक ग्रेट टीचर बनने के लिए, रियल टीचर बनने के लिए क्वालिटीज होनी चाहिए बहुत सारी. लव ऑफ ट्रूथ, नॉलेज,
right? Loving concern for one's students, clarity and patience, number of features, qualities should be there in a teacher, right? So आप ये quotations भी लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी आपको जो अच्छी लगे, और एक और wonderful quotation you can add it. Every child deserves a champion. कौन है वो champion? हम हैं वो champion, right? And adults who will never give up on them. कभी भी अपने जो efforts हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, who will never give up नहीं करना है, who understands the power of connection. कनेक्ट कैसे कर सकते हैं बच्चों के साथ, राइट? उनके साथ अपनी थिंकिंग कैसे अलाइन कर सकते हैं, हाउ टू मोटिवेट देम, who understands the power of connection and insists they become the best they can possibly be. Yes, every child is a genius in his or her field, respective field, as per the interest, as per the learning style. In a completely rational society, the best of us would be the teachers, and the rest of us would have to settle for something else. So, my dear educators, you can use these quotations to talk about different approaches on teaching as a profession or a vocation, और इसके अलावा और क्या है, right? Now there is one more approach, teaching as a way of life. Way of life is not to be called a job, not to be called a profession. It is a way of life. I'm just going to read the words by our revered Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Teaching is not a profession, but or a job, but a way of life. It's a Jivan Dharam. A teacher never retires and always continues to endeavor to teach the new generation. Retire मतलब अब इसको literal meaning में लेंगे या figurative लेंगे, कैसे देखें? I mean to say कि retire ठीक है, एक retirement की एज होगी, पर आपका टीचिंग जो है, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो तो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि on going and going, and they need to understand the changes happening across the world. Prepare the new generation accordingly by arousing the curiosity in them, right? So that is a way of life. So now, my lovely educators, there is one more point आपको मेंशन करना है, तो मैं इससे अग्री नहीं करती, किसी हद तक है, बट लेट्स रीड इट. यू नीड टू मेंशन द सेम. टीचिंग, कुछ लोग सोचते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग जो है इट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड, या फिर सिंपल ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए काम है, या वो भी नहीं है, राइट? इसका कारण क्या है, हम उसके लिए बात करते हैं. क्यों ऐसा सोचा जाता है, व्हाई दे थिंक लाइक दैट? सबसे पहले कुछ तो ये सोचते हैं कि ये शॉर्टर रूट है. इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कितने साल लगाने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है, और इसमें आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद में आपने 1 साल का कोई डिप्लोमा किया एंड यू हैव बिकम अ टीचर, राइट? तो इसलिए सोचते हैं कि छोटा रूट है. छोटा नहीं है, साथ में हम उसको इसको दोनों तरफ से बात करेंगे. यू गो फॉर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, और इसमें तो आपको थ्रू आउट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है इसमें. बट वो ऐसा ठीक है, किसी की सोच है, तो हम उसमें बात करेंगे इसके बारे में कि व्हेन दे आर सेइंग इट्स नॉट अ प्रोफेशन. सैलरी स्ट्रक्चर की बात आ जाती है, सोचा कहा जाता है कि इट्स अ लो पेइंग जॉब. हाँ, है ऐसा, राइट? इसकी वजह से इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है. बट व्हेन यू आर डूइंग योर लेवल बेस्ट, देयर आर वेरी गुड पेइंग स्कूल्स ऑल्सो. गवर्नमेंट जॉब के लिए हम जाते हैं कि अच्छी सैलरीज मिलती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अकॉर्डिंगली जो भी उनका होता है. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी, ऑन अ पर्टिकुलर स्कूल, बट इट इज रियली लाइक दैट कि सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से एज कंपेयर टू अनदर प्रोफेशन, हम दूसरे प्रोफेशन के साथ में बात करें कंपेयर करके, कि उन प्रोफेशंस में थोड़ा सैलरी ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसलिए भी इसको प्रोफेशन नहीं गिना जाता. एंड ये सोचा जाता है कि इसमें सेम रूटीन फॉलो करना है. एंड टीचर्स क्या करते हैं, असेंबली लाइन का काम करते हैं. जैसे मशीन है, वो एक इसमें एक हमने सेट कर दिया कि ये काम करना है. टीचर्स भी ऐसा ही करते हैं कि वो बच्चों को एक ही तरह की कंटेंट, एक ही तरह का नॉलेज सब बच्चों को डिलीवर करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर थॉट्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लर्निंग नीड्स. पर ऐसा नहीं है. वी एट प्रेजेंट आर वर्किंग ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग. वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. कंपैरिजन विद अदर प्रोफेशंस करते हैं. हम क्या करते हैं, सोचा जाता है कि डॉक्टर्स के बारे में
इनके रिस्पेक्ट और ऑनर की बात आ जाती है कि अगर हम बात करते हैं ये यहाँ पर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ही जो स्कूल जहाँ से हम पढ़े हैं कुछ है, वहां पर जाकर भी क्या होता है, अगर आपके सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहां से कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, नेवी में चला गया, कहीं अदर प्रोफेशन, तो उनको बुला के तो ऑनर किया जाता है, एलुमनाई की लिस्ट में हाईलाइट किया जाता है, और जो टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है, राइट। एक टीचर ही टीचर के रिस्पेक्ट नहीं करता है, राइट। सो दिस इज द रीजन, इस प्रोफेशन नहीं माना जाता है, राइट। तो उसके लिए वी टू जॉइन आवर हैंड्स, दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, वी नीड टू ऑनर देम, ऑनर ईच अदर। एंड देन ये बात और कही जाती है जिसको आप पॉइंट लिख सकते हैं, कि ये कहा जाता है कि डॉक्टर बनने के लिए ठीक है, आपके पास एक लाइसेंस आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, उसके बाद यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, अपना वो करते हैं, एंड देन लॉयर्स हैं, उनको बार काउंसिल में जाके रजिस्टर करना पड़ता है। एक घर बनाया है, उसके हम आर्किटेक्ट से पहले उसका मैप अप्रूव करते हैं, देन वी गो हेड विद दैट, आई मीन घर बनाना है हमने तो एक वो चीज होती है। पर ये सोचा जाता है कि बहुत सारी ऐसी जगह पर टीचर का, बहुत सारे ऐसे हैं अपना विदाउट देयर कंप्लीटिंग देयर प्रोफेशनल डिग्री, वो वहां पर पढ़ाना शुरू कर देते, कहते हैं कि कोई भी पढ़ा ले, एंड वन कैन टीच, एनीबॉडी कैन टीच। बट अभी नाउ देखिए टीचर्स जो हैं दे गो हैड विद द प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज आल्सो। स्कूल्स में आपको जॉब नहीं मिलती है अनलेस अंटिल यू क्लियर योर टेट एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल का है चाहे सेंट्रल लेवल का है, यू हैव टू गो हैड विद दैट। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी की भी बात आ जाती है, जब ये कंसीडर किया जाता है कि टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन। हमने पहले ये बात की ऑटोनॉमी की, टीचर्स दे हैव बीन गिवन फ्रीडम के अपने अकॉर्डिंगली वो टीचिंग स्टाइल्स, मेथोडोलॉजीज, असेसमेंट चेक कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ये भी डिबेटेबल टॉपिक है। कहा जाता है कि आई मीन टीचर्स जो हैं उनको जो कहा जाता है उनको वैसे ही जाके डिलीवर करना है, वो अपना सोच नहीं सकते कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, दे कांट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, इसलिए इसको प्रोफेशन नहीं गिना जाता। तो दे आर डिफरेंट अप्रोचेस, यू नीड टू टॉक अबाउट देम। आप सोचिए आपको क्या लगता है, बीइंग इन अ टीचिंग प्रोफेशन, आई वुड तो लाइक टू से बीइंग इन अ टीचिंग प्रोफेशन ये क्या है? टीचिंग प्रोफेशन है मेरे अकॉर्डिंगली, एंड ये एक इनेट डिजायर है, तो यू कैन गो हैड विद द वोकेशन टू। एंड एज आर पीएम said, it's a way of life. For me it is a way of life. Let me see what is what this is as per you. Do ping in the comment section below, and if you want to know more about such important topics related to our teaching learning experiences that we gonna bring the kind of excitement, enrichment, engagement in our classes, you have to be what, stay tuned, subscribe to my channel, and do share your feedback in the comment section below. Bye bye from Minakshi Narula. Have a nice day.